So last time हमने रूट 53 के टॉपिक पर बातचीत की थी और मैंने बताया था कि रूट 53 इट इज ऑल अबाउट डीएनएस मैनेजमेंट इन क्लाउड, राइट। और आज जो है हम उस पर लैब करके लेंगे, रूट 53 लैब। Now, to do this lab, we are going to deploy one web server in the cloud. This is some web server, right? Windows based, Linux based. और अभी तक क्या हुआ था that if you want to browse this web server, so you as a client, this is the user. So we were doing browsing based on public IP address, right? Because we were doing it all via internet. So as a user, you are connected to the internet, and based on public IP, we are accessing any network service, in this case, web server. So जब तक हम lab environment में कर रहे हैं, so you can use this public IP. But let's suppose this web server is a public web server, right? My website is a head, which is being accessed by the people, countless number of people. So obviously, वो IP address use करने वाले नहीं है. They are going to use the name. They should be using the name, right? So suppose my organization name is ABC, right? I have this domain name abc.com with me, and I want that all these users, when they browse, so rather using IP address, they're going to use this domain name www.abc.com. So when the user uses this domain name, DS name, so it should be able to browse it. That is the whole idea. So steps, क्या क्या करना है हमको इसके लिए? In the first step, that means suppose you have your own website, you have to have some name. Name needs to be registered, domain name, right? So in the first step, register a domain name like abc.com from some domain registrar. Like GoDaddy.com. GoDaddy is the popular domain registrar here, what we are using. And like this, we have many registrars. Okay. So suppose you registered a domain name. Now, domain name needs to be registered because it has to be unique globally. We have to ensure that domain name is the name what you are using. Nobody else is using this name. Now, once you have this name, suppose आपने नाम register करा लिया abc.com. Next step is you have to do the hosting. Once you have the name, then you can do the hosting of your website. And for that, we're looking up for some hosting service providers. Just like we have domain registrars for domain name registration, similarly for hosting services, hosting service providers are there. Right? And common provider, popular provider is hostgator.com. Right? Or like this, again, we have got multiple hosting service providers over the internet. लेकिन होता क्या है बहुत बार, the provider through which we are getting the domain name registered, very often that fellow is providing you the hosting services also, right? अब जैसे GoDaddy है. So when you're doing domain name registration, primarily it is known for domain names, right?
बट दिस प्रोवाइडर नोज कि जब आप डोमेन नेम ले रहे हो तो होस्टिंग आप करने ही वाले हो. So very likely, most of the time, not every time, but most of the time, the registrars are offering hosting services also, right? So यहाँ पर आपको GoDaddy hosting service भी दे रहा है, right? And if you do the hosting services, so होता क्या है? The moment you have this domain name purchased or registered from this GoDaddy, so this is a zone file is getting created. This is the zone file. Last time मैंने आपको बताया था that for a domain, every domain name will have a zone file. So for your domain name abc.com, this zone file is getting created here with GoDaddy, right? You can see it there. And in this zone file, ultimately you're going to have the DNS records. But by default, 2 records are there which are getting created by default. So यहाँ पर भी आपकी डोमेन के लिए जो जोन फाइल है which is there with this GoDaddy, 2 records यहाँ पर वो आपको शो करेगा. One is the SOA record, that is start of authority, which contains all the administrative details about your domain, especially the admin, email address of admin, and certain timer values are there, right? But more importantly, the other record is NS record, name server record. And here it is going to show you the addresses of name servers of GoDaddy. कम से कम 4 name server addresses वो आपको show करेगा, right? So these are the 2 records. These are DNS records which are getting created. These are default and these are mandatory also. On the top of that, you are going to create your own records, जिन्हें हम बोलते हैं A type of record. So यहाँ पर आपको करना क्या है? This is your web server. ये उसका public IP है, and you're going to assign it some name, right? Suppose the name what you're assigning is www, right? So you're going to make an entry here that is the name www, and this is the IP address. This entry you're going to create here in this zone file. जैसे हम बोलते हैं A type of record. See, every entry is a DNS record, and what you're going to create here is the A type of record, right? And like this, whatever resources you have, अभी देखिए web server, but you can have n number of servers in your organization setup. हर किसी का एक नाम आप देंगे and उसका जो address है, public IP address that you want to enter. But right now we are focusing only on web server, right? And now you ask some user, okay, browse, right? Browse using this name www.abc.com, right? तो क्या होगा? When this user is going to make a request using this DNS name abc.com, so request जो है आपका यहाँ से user से चला and directly and indirectly it is going to reach here to this GoDaddy. यहीं पर आएगा, right? It may be going through many servers, forwarded from here to there, and finally it will reach here only, right? With GoDaddy, क्यों? Because domain name registration आपने GoDaddy से ही किया है. And there it is going to check. For this domain abc.com, it is going to check what is the name www. यहाँ उसको entry मिल जाएगा, IP address, and so it will respond with DNS reply. Once you as a user you get to know the resolved IP address, so next time you are going to make a request. Your request, web request, goes based on IP address. Okay. For browsing, right? तो कहने लगे ये काम हो जाएगा if you do it like this. लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, right? Because we are going to use the service of service provider. क्या है वो?
route 53, right? We are going to do the hosting there in the AWS this time, not here on this domain registrar, right? There's a difference. So we are preferring, now preference हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, right? कोई जाएगा HostGator पर, right? Whatsoever the reason, हम जा रहे हैं AWS Cloud पर for doing the hosting because cloud has its own benefits, right? Cloud is boasting that if you are using my setup, so it's highly reliable, it's highly available, it's scalable, it's secure, all such things are there. So as a customer, I say, okay, I'm going to use this Route 53 now, right, for hosting, not this GoDaddy. So हम क्या करेंगे? Yes, suppose you want to use the hosting for hosting this Route 53. So we are going to create using this Route 53 the zone file, right? But Route 53 Amazon उसको zone file नहीं बोलता है, वो इसे बोलता है hosted zone. नाम अलग है, लैंग्वेज अलग है, पर्पस वही है, काम वही है, hosted zone. So just like traditional जो सर्वर्स हैं उसमें हम इस फाइल को बोलते हैं zone file, उसी तरीके से in Amazon in Route 53 this file is known as hosted zone. So you can make out that hosted zone is there for every domain. तो हमने क्या किया, डोमेन नेम लिया GoDaddy से और डोमेन नेम लेकर यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, राइट? ये हमने कुछ भी नहीं किया, उसने यहाँ नहीं किया. Yes. So for this domain abc.com हमने hosted zone यहाँ क्रिएट किया Route 53 में. अब जैसे ही आप hosted zone क्रिएट करोगे, सेम वे यहाँ पर भी दो रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे. hosted zone contains DNS records, तो यहाँ पर SO रिकॉर्ड क्रिएट हो गए और यहाँ पर NS रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया. जैसे आप hosted zone बनाओगे, ये दो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगे. And this time in the NS record, it is going to show you the name server addresses of AWS, right? And now on the top of this, you're going to create your own entry, a type of record that your server is www and this IP. You're going to mention over here, right? And now you ask some user, do the browsing, right? So this user, as usual, वो लिखेगा www.abc.com और यहाँ पर क्या होगा, दिस रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? सबसे पहले सेम घूमते घामते वो यहीं जाएगा, कहाँ पर? GoDaddy नेम सर्वर्स पे. Why? Because you have done this registration with GoDaddy only. So request is going to be reaching here to the GoDaddy servers only. अब यहाँ पर जब रिक्वेस्ट आएगा, चेक करेगा, and here we don't have any entry, right? GoDaddy is going to check its name servers. क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एंट्री आप कर रहे हो वो नेम सर्वर्स में यहाँ पर अपडेट हो जाती है. And here it is not going to find any entry now. So this request will be dropped. वो यहीं ड्रॉप हो जाएगी. Actually आपने होस्टिंग कर दी है. You are using the Route 53. But the problem is what? The problem is nobody knows it. ये बात किसी को पता नहीं है कि आपने होस्टिंग कहाँ किया है, खास तौर से GoDaddy को, राइट? So जब रिक्वेस्ट यहाँ आता है तो GoDaddy का कहना है कि भाई डोमेन नेम तो मुझसे लिया था, लेकिन लेकर वो कहाँ गया ये मुझे पता नहीं. Okay, is this clear? And so this request is getting dropped here only. होस्टिंग आपने किया है लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है कि कहाँ किया है. And so this is going to put a gap.
यहाँ से ये गैप क्रिएट हो गया है। ऑल द रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड बाय GoDaddy। अब हमें ये गैप को ब्रिज करना है, यानी एक तरीके से हमें बताना है GoDaddy को कि हमने होस्टिंग यहाँ किया है, राइट, AWS में। तो ये गैप को ब्रिज करने के लिए हम क्या करेंगे, because whatever entries you're going to make over here now, it is all getting updated in the name servers of AWS, और name server addresses आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। So you're going to pick up all these name server address values, meaning you're going to copy all those name server address values, and after doing copy, you're going to replace name servers of GoDaddy, right? You're going to replace the name servers of GoDaddy with the name servers of AWS। हम इस तरीके से GoDaddy को बता रहे हैं कि जो भी होस्टिंग है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ है, ये है नेम सर्वर्स ऑफ AWS, right? This is a copy paste job. You're going to copy the names of name servers of AWS and paste it here. You have to paste it here. Replace करना है, ये यहाँ से हटा देना है। Name servers of GoDaddy are going to be replaced, deleted, and replaced with the name servers of AWS. Once you have this, so this gap is going to be bridged. Now with this क्या होगा, अब जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगा तो GoDaddy पर ही, and GoDaddy is going to check the name server addresses, और यहाँ उसको name server addresses मिलेंगे AWS के, so request is going to be forwarded to the name servers of AWS, right? और वहां पर उसको ये एंट्री मिल जाने वाली है, right? Once it gets to know the IP address, the request is going to be back here to the user, जैसे यूजर को मिलेगा IP address, so जैसा मैंने बताया, next time the request all goes based on IP address to the actual server. This is a process which happens, और ये हम करके देखेंगे, right? बताइए, is this clear? This is the process. तो सबसे पहले हमें एक डोमेन नेम लेना होता है। तो मैंने ऑलरेडी एक डोमेन नेम दिया हुआ है GoDaddy से, right? We have to do the registration because domain name has to be unique, ये जरूरी है। Then you are going to do the hosting, right? So you have to go to the root 53 hosting, हम अभी root 53 में करेंगे, right? Not there with a GoDaddy or any other service provider. चलिए, I'll show you practically. So go for root 53. Meanwhile, मैं आपको बता दूं, GoDaddy, right? यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट, and if I show you the domain name, so this is a domain name, cloudlearning.live, ये मैंने लिया हुआ है। Go to the DNS management, right? और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड, आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ये एक तरह का जोन फाइल है, राइट? लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने नेम सर्वर चेंज किए हुए हैं यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक डोमेन नेम लेना है, राइट? ये डोमेन नेम लेने के बाद
go to the root 53. ये steps हैं, right? You have to do hosting. So hosting के लिए आप root 53 पे जाएंगे. Go to the hosted zone and create a hosted zone. And जो भी domain name आपने लिया है, using that domain name, I just copy paste it, right? So domain name is this. There's a description. Type of domain name is public hosted zone because it has to be globally unique. And create. बस इतना ही काम करना है. याद रखिए सर्विस चार्जेबल है. जैसे आप इस सर्विस को यूज करेंगे, $0.5 are going to be billed plus GST. Okay. So अभी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगा. But once you create it, वो ऐसा दिखाई देगा आपको. Right? This is the zone. Right? Hosted zone. Type is public. Created by root 53. 2 रिकॉर्ड इसके अंदर क्रिएट हो गए हैं by default. If you want to see, go inside और ये देखेंगे आप रिकॉर्ड्स. 2 रिकॉर्ड हैं यहाँ पर. One is this NS record, other one is the SOA record, right? ये दोनों रिकॉर्ड by default क्रिएट हो जाते हैं और you cannot delete them. ये है नेम सर्वर रिकॉर्ड्स. ये है नेम सर्वर्स ऑफ AWS. यहाँ पे लिखा हुआ है ना AWS DNS. तो ये नेम सर्वर्स हैं AWS के. 4 नेम सर्वर्स हैं. यानी जो भी एंट्रीज आप यहाँ क्रिएट करोगे, ये टाइप ऑफ रिकॉर्ड, they are all getting updated here in the name servers of AWS. तो ये क्रिएट हो जाने के बाद आपको क्या करना है? One by one you are going to pick up these names. You need to bridge the gap. लास्ट में डॉट लिखा हुआ है, डॉट को इग्नोर करना है. Pick up this and go to the GoDaddy name servers और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है. चेंज द नेम से पहले चेंज करोगे आपको ऑप्शन देगा. अभी ऑलरेडी चेंज है तो मैं इसको अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट? और इसको अपडेट जब आप करोगे तो अपडेट होने में टाइम जाता है थोड़ा. पहली बार जब आप करोगे तो 3-4 घंटे भी जा सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वन बाय वन you have to copy these name server addresses and paste it over here, right? By changing the name servers. Initially वो आपको name server GoDaddy के show करेगा, right? But now we are going to replace those name servers of GoDaddy with AWS name servers. बस इतनी तैयारी करनी है, right? And this is ready. Once it is ready, you have your web server. चलिए, तो मैं एक वेब सर्वर बनाता हूँ. This is my web server on AWS. Instance type T2 micro, same key pair. I can use any network as such. Default security group, right? Storage default, right? और ये जो पब्लिक एड्रेस है वेब सर्वर का, this you are assuming that this is the static web server address. क्योंकि सर्वर के एड्रेस स्टैटिक होते हैं. So pick up this address and go to root 53, create a record, right? This is going to be a type of record type a type, right? record का नाम suppose मैंने बोला www, complete FQDN बन जाएगा www.cloudlearning.live and this is going to be the IP address, right? बाकी सब डिफॉल्ट रखिए. TTL 300 seconds. Routing is simple and create record. अब ये जो भी रिकॉर्ड हमने बनाया है, this is getting updated in the name servers of AWS, right? जो हमने GoDaddy को बता दिया है, right? So this is the name and this IP address.
राइट, तो उसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम जाता है. So meanwhile, I will have this server configured as web server. I will log into this, and then we'll verify my browsing based on the name. Right. So if I try to browse it based on IP address, तो होना चाहिए it works, right? But if suppose this resolution ये होता है, so I'm going to pick up this domain name now, right? And try to browse it based on the name like this. Working. In fact, this is getting solved to the public IP address. ये public IP address है, और अगर इस नाम को अगर मैं पिंग करके देखता हूँ तो ये IP address ही आना चाहिए. ऐसे पिंग, देखो वही IP address है. 54, 224, 149, 124, right? So the way I'm using it, anybody can use it, right? यही नाम जो है अगर मैं आपको शेयर करता हूँ in the chat, try using it. ब्राउज करके देखिए और यही रिजल्ट आपको आना चाहिए. So it is going to be so fast. ये इसलिए भी हुआ क्योंकि पहले से ही जो है अपडेट किया हुआ था. ये जो नेम सर्वर्स हैं यहाँ पर ये अपडेटेड थे. वर्किंग सर. ये पहले से अपडेटेड थे. जब आप लोग उसको करेंगे मान लीजिए तो आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी लग सकता है. बट यू हैव टू हैव दिस नेम परचेज्ड. ठीक है, तो आप कोई सा भी सस्ता सा डोमेन नेम लेकर इसलिए आपको कर सकते हैं. यस, बताइए. एनी क्वेश्चंस? सर जैसे ये डोमेन नेम सर्विसेज होते हैं तो ये सिर्फ लाइक पेड ही होते हैं या कुछ फ्री भी अवेलेबल है मार्केट में? सर्च करके देखो. फ्री जो है अभी मुझे एकदम से आइडिया नहीं कितना काम करेंगे या नहीं करेंगे, करके आप ट्राई करके देखो. फ्री मिलते हैं डोमेन रजिस्ट्रार्स, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए 3 महीना 6 महीना ऐसे मिल जाते हैं. लेकिन रिलायबिलिटी मुझे लगता नहीं रिलायबल है कि नहीं. कभी काम करते हैं कभी नहीं करते. सस्ता सा डोमेन आप यहाँ से ले सकते हो 200-300 रुपए का, 1 साल के लिए काम करता है. ये रिलायबल है, गोडेडी रिलायबल. बाकी का भरोसा नहीं. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यू मेक ए सर्च, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार, ऐसा सर्च करोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा. ठीक है, श्योर सर. ओके, चलिए अभी हम मंडे को मिलेंगे. विल हैव द नेक्स्ट टॉपिक. सर बोलिए. एक सवाल था कि जैसे मतलब हमको जैसे प्रोजेक्ट का हमने पूछा था तो क्या कभी ऐसे एक्स्ट्रा क्लास या मतलब जब अपना सिलेबस एक पॉइंट पे पहुंच जाए तो हम ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते कॉलेज में भी अभी ये पूछना शुरू कर रहे थे इसीलिए हैं. तो एक आइडिया हो मतलब जाता कौन मतलब. कौन पूछ रहे थे? आई मीन लाइक अभी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना है तो फिर हम लोग को अच्छा टॉपिक एंड ऑल फॉर्म भरने के लिए अच्छा, बोल रहे फॉर्म थे भरना है. तो ठीक है, ठीक या है, चलेगा. ओके, ऑलराइट, करेंगे. यस सर. श्योर सर. Okay.